हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज इस वीडियो में हम ये पोस्टर डिज़ाइन करने वाले हैं डांडिया इवेंट के लिए। सो इफ़ यू डोंट नो फोटोशॉप एंड ऑल दैट, डोंट वरी, वी विल बी डिज़ाइनिंग दिस स्टेप बाय स्टेप, सो डोंट वरी। एंड यू कैन डाउनलोड ऑल दी फुटेज विच आई हैव यूज्ड इन दिस वीडियो। सब मैंने बता दिया है कैसे कैसे डाउनलोड करना है, सो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर ट्यूटोरियल जस्ट लाइक दिस, सो आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट, आई मीन many playlists there, you can watch that on this channel. So चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एंजॉयड समथिंग। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, लेट्स ओपन फोटोशॉप। तो ये रहा हमारा फोटोशॉप। नाउ लेट्स गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन न्यू। So this is for print, so we are going to select these print sections and here you can see A4. Just click on that and then click on create. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक इमेज लेना है गूगल से। So as you can see on my free pic, here is the nice background, so we are going to use this. So just click on this download and free download. तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। Now here we have two files, one is Illustrator one and this simple image. So we are going to edit the EPS format in Illustrator. So just open that in your Illustrator. So here there are some extra elements, so we need to remove that. We don't need, and that's it. Just select all the elements, press Ctrl C. Now we are going to Photoshop and यहाँ पर हमको सिर्फ पेस्ट कर देना है, so press Ctrl V. Now just select these flags, press Ctrl C और यहाँ पर पेस्ट कर देना है. Press Ctrl Alt and drag to duplicate, then press Ctrl T, right click, flip horizontal. और फिर इस स्लाइड को कॉपी करेंगे, so press Ctrl C and here press Ctrl V and you can choose pixels. Now this one we need to change layer mode, so normal पर क्लिक करके यहाँ पर इसको हम कर देंगे screen and just put it here. So here we have our background ready, just we need to put here the image. So this one we need this image, but you can see यहाँ पर और भी सारी images है, you can use these ones. So we are going to use this, just click and here you can download PNG. So I have already downloaded. Now in the image you can see the text, so we need to remove it. So click on that mask. Now brush tool select करते हैं, so make sure you have a black and white color here and just remove that. Now right click by your brush tool and hardness should be 0 and just remove it from down part like this. तो अब हमको यहाँ पर कुछ लिखना है, so select text tool and type here. So my font name is this and this is regular font size this much and we are going to large it like this. Now here we need to give a gradient on the text, so just select your text and FX gradient overlay और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको येलो कलर रखना है, लाइट येलो, and this one will be dark yellow a bit like this. And now just click on linear, make sure it's selected linear and decrease the scale so you can see the difference between these colors. Now set the angle like this. That's all. Click on OK. Now another text we need to write here. The font will be Babus. The font will be Babus regular and that's all. Press Ctrl T and put it here.
Now select all your text like this. Now this will be regular and click on that box and यहाँ पर हमको text के बीच में spacing देना है. So just increase that a little bit like that. Hit enter. Now we are going to apply some effect on the text. So just click on that layer and gradient overlay. And यहाँ पर हमको देना है black and white text color. So this will be white and this will be a little gray like this. Now एक और चीज़ देनी है यहाँ पर stroke. Just click on that stroke and the size will be 3 something or 5. Yeah, 5 is better. And that's all. Hit OK. Now we are going to give some effect like this, the T noting with Y. So first of all, what we need to do, just select this text night and move it to below the text like this. Now this text should be on the top. Now select your Dandiya text and create a mask on it. Now press B, right click, hardness should be 100% and the size should be according to your text like this. And you can remove something like that. So yeah, here we have the bend effect. और अब हमको यहाँ पर डेट डालना होगा जो कि इस इवेंट के लिए है. So select your text and write your date and timing for this event. So the text size should be a bit small, so we can select 20 and here is my text. So for this th, what you need to do, so I will do it for example. So here is my text. So what you need to do, just select this th only and यहाँ पर जाना है, box पर click करना है and here you can see this text small t and 1 on the top. Click on that. So आपको ये वाला effect मिल जाएगा. Now we have our text ready, so just click OK. And behind the text we need a rectangle for better visual. So rectangle select करते हैं हम and यहाँ पर एक rectangle बना लेंगे ऐसा. And here we need to give yellow color only for the rectangle like this. And now select this rectangle and put that below the text. So now you can see the text visible. Now just select the both text and rectangle, go to select all, go to move tool and click on this center button. Now press Ctrl D. So अभी हमारा rectangle बहुत ज़्यादा बड़ा है, so we need to resize it according to our text. So just see where it will be fine. Yeah, this much is fine. And increase like this. Hit enter. Now select your rectangle and create a mask. Select brush tool. Hardness should be 0 and just now select this rectangle और opacity हमको कर देनी है 50. So we can see our text in white. Okay, so here we have our ready. Now below the text we can write here the venue जहाँ पर ये event हो रहा होगा. So here we have the address. And for the text like this, what you can do, just select all your text by pressing Ctrl A. Our font is, you can see, Webus, and you can click on this box and just give spacing like this. तो आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा. तो हमको ये सेंटर लाइन करना है. So go to select all, click on move tool, click on that. So we have center line. Press Ctrl D. Now on the top we can write the invitation name
like that, and a center line. Now here we can give some lighting effect on the image. उसके लिए क्या करना है, just go to here this icon and take brightness and contrast effect. Now click on this button and just decrease some brightness like this, and then click on this white mask, press B and just get some lighting like this, like that. So before it was like this and now it is like that. So I want to edit in my background, so I can delete this, and just in Illustrator what I can do, just delete this light and move the elements little up. So now I can press Ctrl C and directly into Photoshop, press Ctrl V, hit OK, and we can do it like this. So yeah, now it's looking nice because that light was coming on the text. एंड अगर यहाँ पर आप अपना लोगो देना चाहते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं. तो हमारा ये पोस्टर ऑलरेडी डन हो चुका है. अब हमको यहाँ पर सिर्फ लाइटिंग इफेक्ट डालना है. सो गो टू योर ब्राउज़र एंड सर्च हियर लाइटनिंग इफेक्ट. So just select any of these lighting. So I think it is good. So you can just right click on it, copy image, go to Photoshop, and on the top of all the layers just press Ctrl V, press Ctrl T and enlarge it. बस अब क्या करना है, हमको नॉर्मल पर जाना है और यहाँ पर अपना लेयर मोड देख लेना है कौन सा आपके इमेज पर सही है. Screen is perfect, so you can select the screen and just put that here. Now you can see the edges. So what we can do, just create a mask on the image, press B, hardness should be 0, and just remove that like this. Now same effect we need to give on the right side. So press Ctrl G, duplicate, Ctrl T, right click, flip horizontal, and then keep here like this. And we can give the Dandiya stick like this, and that's all. I think we have already done it. So for the image you want to save, go to file and यहाँ पर हमको देखना है save a copy, ओपन ऑन योर कंप्यूटर, एंड यहाँ पर आपको कई सारी फॉर्मेट दिख जाएगी, JPEG एंड PNG. सो JPEG यू कैन सेव, एंड यहाँ पर हमको नेम दे देना है, और यहाँ पर हमको फुल कर देना है ये वाला, देन क्लिक ओके. तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ पोस्टर लाइक दिस. एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड एक और बात, आई हैव अपलोडेड सो मेनी ट्यूटोरियल्स जस्ट लाइक दिस. इफ़ यू वांट टू वॉच, जस्ट गो टू माय चैनल एंड go to playlist section. You will find many videos in there. So I will meet you in the next video. Until take care. Thank you so much.